So, hello guys. So this is Rahul, and yeah, so this is I want to talk about something very like important to everybody who want to make a career in IT, and he wants to know about which is the like right course for him or her, whether they should go ahead with that courses or not. So for that thing, what I will say, yeah, many times what happens, you're not aware of the like plus and minus, like every course will have its plus and minus. ठीक है, कोई भी कोर्स आप करोगे, it may suit suit you, it may not suit you. ठीक है, because it depends on your background, your skills, like what is your capabilities. So it is not so simple that anybody can do any course. And most importantly, when you choose any course, what you do, you go to an institute and ask, sir, I want to learn this institute. Tell me more about this courses and what is the prerequisite, whether I can do it or not, and all those things. But actually, you should not go to an institute. You should go to a company and say, sir, yes, I want to make a career in data science. I want to make a career in cloud computing. I want to make a career in cybersecurity. What I should do? So you should talk with the industry person, not the institute. Okay, because the industry person, the companies knows, okay, what they want from people. ओके, बट होता क्या है कि आप जाके पूछते हैं इंस्टीट्यूट में, उनको अपना कोर्स बेचना है, वो आप कुछ भी कर कोर्स बेचेंगे। आप भी फंस जाते हो कि यार ये दे आर टेलिंग मी दिस थिंग, ये है वो है, दे आर शोइंग दैट दिस एंड दैट, आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें तो कुछ बात है, आप मान लेते हो उसको। ठीक है, बट एक्चुअली जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना, कि व्हाई लाइक what is the simple thing we miss in our life when we do something, है ना, something obvious. ठीक है, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट को नहीं पता होता है, वो कंपनी को पता होता है, एचआर को पता होता है। एंड आप उसके पास जाओ, कंपनी के पास जाओ, एचआर के पास जाओ, somebody is already working in IT कंपनी, आप उसको पिंग करो लिंक्डइन पे कि कैन यू हेल्प मी विद दैट थिंग, क्या मुझे करना चाहिए, व्हाट शुड बी द रोड मैप, हाउ कैन स्टार्ट माय जर्नी, नो इश्यूज, यू कैन डू दैट थिंग। सो आपको वो करना चाहिए, बट होता है कि इंस्टेड आप इंस्टीट्यूट के पास जाते हो, इंस्टीट्यूट का अपना वही, अल्टीमेटली दे रनिंग अ बिजनेस। अभी कोई कैंडिडेट आया तो वो कोर्स उसको नहीं बेचेंगे, वजह उसको उसको फायदा होगा नहीं होगा, अगर वो उतना सोचेगा तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा। तो 99% यही होता है, आपको बेनिफिट हो ना हो, आपको लगता है बस उनको कोर्स बेचना, आपको सब कुछ बोल के बेचेगा, हाँ भाई तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा, ये ऐसा वैसा। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं। तो आज मैं क्या बात करने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा टॉप 10 कोर्सेज है जिसके बारे में बहुत हाइप बना दिया गया मार्केट में, बट उसके बारे में राइट अवेयरनेस नहीं है। उसमें आपको क्या चाहिए, कैसे उसमें एंटर करना है, उसमें रियली कितना सैलरी मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है, उसके बाद और कितना सारा जॉब्स है, नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं, ठीक है, इसके बारे में क्लियर आपको आइडिया नहीं रहता है। और वो एक हाइप बनाया जाता है कि अरे इसमें बहुत जॉब्स है, ये फ्यूचर है, ये मैं कर लूंगा तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो विच इज सो मैं आज ने मैंने 10 शॉर्टलिस्ट किया है, जो कि लाइक इट विल कवर 90% ऑफ द courses which are hyped in the market. Okay, so sorry. So yeah, so I start with the top, सबसे जो टॉप hyped course है अभी पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, and that is nothing but data science. You might have heard of this thing. Okay, you might be interested on this thing. Okay, or might you, I don't know what is, if you're watching the video, what background you come from. Okay, but the what are the top top things which comes in mind when you talk about data science? People think, yeah, this is a very great career. Why great career? Obviously money. We think it is having a lot of money. Okay, so first thing which get associated with this thing is money. But yeah, you get very high salary. First of all, this is one of the hype. Second is that yeah, there's so many jobs out there. There's so many jobs out there.
Okay, so now second, that is one more hype. And third, the most like weird thing I will say, सबसे झूठ वाला बात कि अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, आपको डेटा साइंस में एंटर करना है, anybody can do. That is not right. Not anybody can do. Without any programming experience, without any IT background, anybody can do. A BCom person can also do. Uh, Mechanical engineer also can do. Anybody can do. Okay, if even if you don't know any bit of programming, IT बारे में कुछ भी नहीं पता, आप डायरेक्टली 6 months में आपको एक कोर्स करके आप बन जाओगे, डेटा साइंस में एंटर हो जाएगा. This is the biggest hype. Okay, money is okay. Money, jobs, number of jobs is might be little bit, some truth is there, but somebody says to you, okay, no coding is required, no programming experience is required. He's lying to his teeth. ठीक है, वो सफेद झूठ बोल रहा है आपसे और आपको उल्लू बना रहा है. सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ. ठीक है, आप जस्ट सोचो, अब लॉजिकली सोचो. सपोज आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर. कोई मुझे बोलेगा डेटा साइंस बहुत एडवांस कंसेप्ट है, अगर आई डोंट नो वेदर यू हर्ड ऑफ दैट थिंग. एडवांस एल्गोरिथम्स होता है, डीप लर्निंग, ऑल दोस थिंग्स. Computer science professional who have studied computer science for 4 years, MTech guys professional who studied 6 years, they struggle to write algorithms at that level. Now, after doing engineering for 4 years, 5 years, 6 years, even people working in industry, they struggle to write advanced algorithms and understand those things. Okay. Now, if somebody will say, oh, I don't know any programming, I don't know any coding, I start from scratch, I will reach to the top level. Yeah, that might be some born genius, maybe possible. Out of 100 people, that might be one person, but 99% will not be able to do that thing. And not the company is not after some born genius, they want genuine people who can deliver things. अगर आप डिलीवरी नहीं कर पाते हो, फिर नो पॉइंट. तो ये सबसे बड़ा झूठ है, नो कोडिंग रिक्वायर्ड. ठीक है, इसको मैं बोल्ड करता हूँ. ठीक है, तो ये जो आपको झूठ बोला जा रहा है, इससे ये like it's like please be like very particular about all these things, because आपको कब कौन क्या बोलेगा, क्या बताएगा, you don't never know. Okay, so this is like what I will say. Always you have to understand the things. सेकंड, अभी अच्छा ये तो एक हो गया, इस पे मैंने बहुत एम्फसाइज किया. तो ये आप देखो, आप ट्राई, अगर आपको करना है, आप कोर्स करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा मैं क्या बोल रहा था. वंस यू विल डू दैट थिंग. ओके. सेकंड इज मनी. मनी में बोला जाता है सबसे हाईएस्ट सैलरी है, ये भी बहुत बड़ा झूठ है. ठीक है, बिकॉज आईटी कंपनी का एक बजट होता है. सपोज देयर इज अ प्रोजेक्ट, उसमें एक पर्सन फ्रंट एंड डेवलपर है, एक पर्सन बैक एंड डेवलपर है, एक फुल स्टैक डेवलपर है, कोई डेटा इंजीनियर है, एक डेटा साइंस का भी टीम है सपोज. तो ऐसा नहीं होगा कि अच्छा मुझे 10 लाख का पैकेज, उसको 20 लाख का पैकेज. ऐसे नथिंग लाइक दैट. इट डिपेंड्स ऑन देयर पर्सन एक्सपीरियंस, है ना. ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज लाइक अ कंप्लीट लाई. एंड इफ यू वांट टू चेक, यू कैन गो टू जॉब पोर्टल्स. आप जाओ यहाँ पर, सपोज मैंने यहाँ पर सर्च किया है, सपोज डेटा साइंस मैंने सर्च किया है. अभी मैं सैलरी में जाऊंगा, यहाँ पर सैलरी का ऑप्शन आता है. ठीक है, आप सैलरी में जाओ. जस्ट क्लिक ऑन व्यू मोर. Now check, this is 0 to 3 lakh, 3 to 6, 6 to 10, 10 to 15. Now this is general package you can get in any other development. कोई भी development उठा लो, सब में ये package common है. Now see the number of jobs, 6,000, 10,000, 16,000, 8,000 is 24,000 plus 4. 28,000 jobs will pay you, not 25, sorry. Yeah, this is 8,000. Yeah, so 8 plus 10 plus 6 is 24,000. So 24,000 jobs are paying you less than 15 lakhs, which is as common if you go for a Java, .NET, anything, or even a PHP. And then this job, this is 4,000, 15 to 25 lakhs. Okay. Now this might be looking a good salary, but this is not for a fresher level. This is the entry level jobs. And this package is now available to everybody, even on .NET developer, Java developer, PHP developer, front-end React developer, or earning the same salary. I'll show you. Just wait for some time. Okay, so AB is not right. Okay, you see the percentage. 1,000 jobs are paying 25 to 50 lakhs, the highest salary. Okay, out of 28,000. Okay, so just calculate the percentage. It is not even 5%. Okay,
you suppose I search something very simple. I search JavaScript. JavaScript is a language. Okay, मैंने JavaScript search किया. Search मैंने मारा. Okay. Now see the uh, salaries here. Okay. If I click on this thing, you see the number of jobs is also more. Okay, but okay, this is 53,000 jobs, 90,000 jobs. So jobs are also 10 times what you see in data science. That is also the two lies. Number of jobs ज़्यादा है, sir, that is also not right. Second, salary ज़्यादा, that is also not right. Okay, so open your eyes and ears. आप कल को उसको गाली दोगे, अरे उसने मुझे झूठ बोला, उसको पता नहीं था, उससे कुछ नहीं होने वाला है. If you have to achieve something in life, you have to take that decision. You can't like leave your life on somebody else कि अच्छा उसने बोला, उसने सुना, मैंने कर लिया और अभी मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ. This is not right. ठीक है, everybody runs towards a trend कहाँ पर लोग भागते हैं उसके पीछे, but at the same time we have to unclutter और unhype the things. कि hype जो है उसके पीछे आपको clear होना चाहिए कि what is the real thing. Okay, so I will not go too much because I have to cover other courses also, but yeah, this is the real thing. This is not true. ठीक है. नो डेटा एनालिटिक्स ये भी एक बहुत चलाया गया है ना, बिकॉज आजकल क्या है, सबको पेयर कर दिया जाता है. इतना आपको नो कोडिंग है तो कोई बात नहीं, यू लर्न पावर बीआई, यू लर्न टैबल्यू. ठीक है, थोड़ा बहुत पाइथन जान लो, आप डेटा एनालिस्ट बन जाओगे. दैट इज आल्सो नॉट ट्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो लेट मी सर्च डेटा एनालिटिक्स. ओके, सपोज आई गो हियर एंड जस्ट सर्च डेटा एनालिटिक्स. तो आप जब कोई कोर्स चूज कर रहे हो तो पहले आप एक बार रिसर्च करो. यहाँ डेटा एनालिस्ट में सर्च किया, आई गो टू सर्च. अब देखना कितने सारे कोर्सेज में आपको पाइथन दिखेगा, पावर बीआई दिखेगा. यहाँ दिखा आपको पावर बीआई. ओके, नो प्रॉब्लम. अभी नीचे आई विल स्क्रॉल डाउन. ठीक है, हियर आल्सो यू कैन सी पावर बीआई, नो प्रॉब्लम. लेट्स गो डाउन. हियर यू कैन सी MySQL. Then this is SAS, this is SQL, Power BI. Okay, fine. You see Python, data, something machine learning. So sometimes data scientists are also referred as data analysts. ऐसा कुछ defined distinction नहीं है. Some companies में data science का position ही नहीं. Data analyst will do everything. Machine learning is like everything. There is no clear distinction. ठीक है. So let me show you. Now let's suppose this is, if you see this thing, okay, let me open this thing. Data analyst. Let me zoom. So I can show you clearly what is this is trying to do. Okay, one day ago, job applicant, see the number of jobs people are applying. So competition is obviously there will be, because hype the competition bhi zyada rahega. So the technical skills may, if you see Python, data SQL query, data cleansing, warehouse. Have you heard of data warehouse? नहीं पता. Pivot table पता होगा. VLOOK. This is Excel. Sometimes people who work on Excel also, they also comes under data analyst. They make some SQL formulas, queries, pie charts. वो भी data, उनको भी data analyst बोला जाता है. So, okay, let me show you some. Go to third page. और क्या क्या है? अभी इसमें जो MySQL पे जो काम कर रहा है उसको भी data analyst बोला गया है. यहाँ पर आप देखो. Let me show you. So advanced Excel, I was to telling Excel पे अगर आप काम करते हो then also you can become data analyst. Okay, but yeah, like this thing. ETL. Now somebody अभी आपने सुना नहीं होगा, might be heard, might not have heard. So ETL is extract, transform, load. So what is happening?
From database, sometimes we have multiple database. There's a concept of data warehousing, like some kind of central place where we dump lot of data at one single place. That is data warehouse. Now, how do you connect with that thing? That is the data engineering process. So this is also data analysis. Somebody will say, इसमें तो Power BI तो नहीं लिखा है इन्होंने. They have just written, okay, you know SQL, you know SSIS. अब SSIS का आपने नाम ही नहीं सुना होगा. What is SSIS? Is very important skills to have. So what I'm trying to say, I'm not saying that jobs are not there. Jobs are there, but not every job you have to learn Power BI or Tableau. There are other skills also, like you can learn SSIS. Okay, you can learn ETL. For ETL, there are a lot of different tools like Informatica is there, Teradata is there. बहुत सारा आप search करो. ठीक है, आज अपना time नहीं, I'm not going to detail. But I'm just trying to give you the idea that we are trying, everybody is trying to do the same thing. And that is the problem. अभी देखो यहाँ पर manage the data warehouse. I told you the data warehouse. The data warehouse is also very important. Nobody will teach you that because आपको पता ही नहीं कि ये भी होता है ना? What is ETL? ETL, and so two ETL and data warehouse. How do you manage this thing? So this is also one of the important things. जहाँ पे you can become a data analyst, or we can say whatever is the name. So there are various things. Okay. So people are not aware of that thing. Excel भी आप सीखो, यहाँ Excel लिखा है. Excel सीखो, उसमें jobs मिलेगा आपको. So not every job will require you to do the same thing and same thing. You have to think about that. You have to go deep and understand what are different uh, possibilities in that thing. Okay, so uh, yeah. So now you can see if I show you some more different. Yeah, suppose this is obviously you might have heard of this company, Adidas. Okay, this is a sports company, correct? So what they're asking for? They're asking for PySpark. They're asking for SQL. They're asking for cloud, big data. इसको भी they're saying this is also data analyst. So data analyst को define नाम नहीं है, ठीक है? Then they're asking. So what I'm trying to say is you can learn lot of different things to like be different from the crowd. Okay, and जितना jobs बताया जाता है उतना jobs नहीं रहता है. And सबसे important point again this thing is people are trying to lure the non-technical people into this thing. So no, आप non-IT से हो non-technical, no problem, details बन जाओगे, Power BI सीख लो. It's not right because you just Power BI will not do, because you have to understand how your computer system works, how the database works, okay, how the operating system works. That's why company prefer the computer science people, and you are not from that things. But instead of selling the courses, तो आपको बोले कि हाँ कोई नहीं मिल जाता job. Yes, मिल जाता, but it will not be easy, obviously. Okay, so I'm not saying you should not do. If you're interested, you do it. But at the same time, you just go deeper beyond the hype. आप hype के पीछे जाओ, देखो कि उसमें और real में क्या क्या चीज है, कितने मतलब उसमें different areas है क्या. In data analytics I show you. One is Excel. अगर आप Excel करते हो तभी data analyst बन जाते हो. अगर आप SSIS करते हो तब भी data warehouse में भी एक field है, ठीक है. फिर big data तो different हो गया. So a lot of things. There are a lot of things which people are not aware of that thing. And वो they think है बच्चे मुझे यही आएगा तो मैं job मिला, वरना job नहीं मिला. It's not right. There are a lot of things. Data warehousing is a big field. People are not aware of that thing. Data warehousing, ETL. How do you move data from one place to another place? That is for you use SSIS tools and packages. And these are a lot of jobs are there in that also. So what I'm trying to say that if you are thinking of this thing, don't just think अच्छा कि there's only Power BI is there. It's not like that. You can think of ETL, think of data warehouse. Okay, just search data warehouse. What is data warehousing concept? ETL process. आपको मिलेगा कुछ और आपको idea मिलेगा what is I'm talking about. Okay, so that's why I'm trying to tell you that we have to find a way for ourselves, different from the crowd.
वरना क्लाउड में आपका रेज्यूम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में क्या है? क्लाउड इज द फ्यूचर, लॉट्स ऑफ पीपल आर टॉकिंग इज द फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, देन पीपल टॉकिंग अच्छा आप क्लाउड सीख लोगे, you learn AWS, you learn Azure, you learn Google Cloud, and people are just blindly अच्छा सर मुझे क्लाउड सीखना है, I want to learn cloud, but अरे क्लाउड में क्या सीखना है? क्लाउड is first of all, if you see this cloud is not the real thing, it's cloud computing, and computing means computer science. People who have done computer engineering or computer studied computers, cloud computing is for them. अगर आपने कंप्यूटिंग ही नहीं पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा ही नहीं है, और आप सीधे बोलते हो सर मुझे क्लाउड पढ़ना है, क्लाउड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड? ओके, a person who's using an iPhone, they also know about the cloud कि अच्छा मैंने फोटो अपलोड की, क्लाउड में मेरा डेटा सेव हो रहा है, लाइक ओके somewhere remote, क्लाउड मतलब somewhere remote, it's okay, everyone understand that concept. बट आपको एक इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर, and you want to work on the cloud, without the computer science knowledge you can't do it, there's no way you can do it. So first of all, ये बोलना कि नॉन आईटी वाले लोग कर सकते, दिस इज कंप्लीट लाइफ, ठीक है। नॉन आईटी वाले लोगों के लिए यहाँ पर स्कोप ही नहीं है, देयर इज नो स्कोप फॉर नॉन आईटी for cloud computing, first of all. Second of all, I have made a video, you can go and watch in detail what is cloud computing all about. Okay, I'm not going much in detail, but first of all I'm highlighting the main important points. So सबसे important point क्या है कि नॉन आईटी के लिए नहीं है ये, ठीक है, बिकॉज कंप्यूटर साइंस का नॉलेज ही नहीं है, अगर कंप्यूटर साइंस नहीं है तो पता कैसे होगा। सेकंड, अगर आपको यहीं पर जाते सर मुझे क्लाउड का कोर्स करना है, क्यों, बट आप व्हाई यू वांट टू डू इट, लाइक क्लाउड करने से आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नथिंग एज क्लाउड, देयर इज ओनली टू थिंग्स, either you are doing development or you are handling the infrastructure. Okay, so आपको ये डिसाइड करना है कि you want to be a developer. Suppose you know .NET, you know Java, you know Python, and then you want to host your application, then you have to learn cloud. So that is like, okay, you know development, now you know cloud. Cloud is on top of development. So to deploy this, your whatever you have done, you know, need to understand the cloud. Okay, how does it work? Okay, but if you don't know development, then what is the use of cloud? You can't say I'm a cloud developer. ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। Second is, suppose in many companies they hire the people who can just manage the cloud, like not, you will not do the development, you will say okay अच्छा आपको virtual machine चाहिए, I will give from cloud, you need to deploy, I will help you how to deploy that thing on an app service. What is the app service? तो उसको बोलते हैं infra. People will not do any programming, they will just manage the you will say some services or something which will just, अगर आप बोलो सर मुझे SQL चाहिए, SQL मुझे रन करना है, तो infra people will just give you अच्छा I will give you the SQL, just managing the things. So first of all, if you want to make a career in cloud, you decide whether you want to be a developer, or you, okay, because you don't like development, you want to go into cloud, then it's an infra thing. You are learning the infrastructure. And for learning the infrastructure, it's like you know, need to know the basic infrastructure, like how does the operating system works, how does the networking works, okay, and how basics commands work on Linux, you know, like a lot of things. Okay, so this is not like अच्छा आपने कोर्स किया और आपको जॉब मिल जाए, it's nothing like that. एंड फ्रेशर्स के लिए कोर्स करके ज्यादा फायदा नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाया, तुम चेक दैट वीडियो, वो फायदा क्यों नहीं आप देख लोगे, ठीक है। इतना बताऊंगा बिकॉज एट फ्रेशर लेवल योर बेसिक थिंग्स आर नॉट वेरी गुड, लाइक यू डोंट नो मच अबाउट विंडोज कंप्यूटर, लिनक्स कंप्यूटर, servers and all those things, and you're directly going for cloud, okay, without knowing this thing. If you know the basics of Linux, Windows and all those things, networking, then definitely go for cloud, no problem. But if you don't know basic of Linux commands, you don't know basic of Windows and what is, how does it work, you don't know very basic concepts on all the server, what is a server, what is all those things, and directly a plot pe ja rahe hai, is not real. Okay, so first of all, this is the main hype non-IT ke liye hai. And then you are not clear this cloud karna. It's not like that. Cloud also has different, what I will say, its own uh, different sectors. तो डेवलपमेंट में जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है, कि किस में जाना है? Now let's come to next, DevOps. So DevOps के बारे में भी लोग, why people want to do DevOps? So फिर वही चीज, people don't want to learn coding. अच्छा आपको programming hard लगता है यार, I don't want to do programming. So people think अच्छा I will do a DevOps course. ठीक है, you do it. But to be honest, if you ask with a person who is already working as a DevOps,
DevOps is not a easy job. It's very tough job. ओके, सो ये आप दिमाग से निकाल दो कि यार ये इजी जॉब है बिकॉज ये प्रोग्रामिंग नहीं करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं है, मतलब मैनेज करना पड़ेगा, बट इट्स अ रियली टफ जॉब बिकॉज इट्स ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स। मतलब आपको डेवलपमेंट का भी आपको आइडिया होना चाहिए, आपको क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए, ओके, एंड देन यू टू मैनेज एवरीथिंग यूजिंग like DevOps tools like Azure DevOps, Jira tools, and there are a lot of things. And you have to know everything about. You have to also know about something about the security, how the security works. So DevOps is a very high pressure job. It's a really a responsible job. It is not like that कि आप सोचोगे यार बहुत सिंपल है, और ऐसा नहीं है। इट्स नॉट रियल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो आप दिमाग से निकाल दो इफ यू थिंकिंग अच्छा मैं डेवऑप्स में जाके मतलब ओके ओके या दिस इज वन थिंग कि एवरी डे यू डोंट हैव टू डू प्रोग्रामिंग, या दैट इज आई एग्री। So if you think that is hard for you or you don't have the interest for that thing, then go for DevOps. But at the same time, it has its own, like I told you, every course will have, everything will have some plus and minus. So the plus is that okay, you will not have to code every day if you don't like coding. It's a good thing for you. The minus is thing, it will have its own pressure and responsibilities, and job is not easy. It will explore a lot of things which you don't know. ठीक है, आपको डॉकर पढ़ना पड़ेगा, डॉकर का नाम ही नहीं सुना है, व्हाट इज डॉकर, व्हाट इज कंटेनर, ये पता ही नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स नॉट सो इजी कि आप बोलोगे नहीं सर आपको कंप्यूटर तो, एंड सब अगेन दिस इज नॉट फॉर नॉन आईटी। क्या बोलोगे नहीं सर नॉन आईटी, नो इट्स नॉट फॉर नॉन आईटी बिकॉज अगेन आपको पता ही नहीं कंप्यूटर साइंस का कंसेप्ट, आप चले गए अब बोलो डेवऑप्स कर लो, सो दिस अगेन आई एम रिपीटिंग डेवऑप्स, नॉन आईटी पीपल प्लीज डोंट डू इट, अदरवाइज यू विल स्ट्रगल इट, you really struggle and you will have a very tough time. Cloud computing, non-IT, so like any company will not give a job, and so don't even try it. Like it's no use of that doing that thing. Okay, development is fine. Development you can do, but infra and all those things is there's no point. Okay, now to go to the next thing. साइबर सिक्योरिटी, इसमें भी वही चीज बताया गया है कि भाई नॉन आईटी आप कर लो, प्रॉब्लम तो वही है, नॉन आईटी वाले लोग इतने से बैठे हुए हैं तो कोर्स बेचो, नहीं ऐसा नहीं होता। अगेन आपको बेसिक पता होना चाहिए, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, हाउ डज इट वर्क। आपको पता ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम पता ही नहीं, नेटवर्किंग का कंसेप्ट पता ही नहीं है, प्रोग्रामिंग में क्या इश्यूज आता है पता ही नहीं है, आप डायरेक्टली चले जाते हो, बोलते सर मुझे साइबर सिक्योरिटी करना है, इट्स नॉट राइट। ओके, सो वो चीज मतलब ऐसा नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट राइट। नेक्स्ट इज द पाइथन। पाइथन इज लाइक, yeah, so why I have kept this Python here, because what I see, if I see a fresher सर मैं क्या सीख रहा हूँ तो बोल सर पाइथन सीख रहा हूँ, आज कल सर क्या सीख रहा हूँ, सर पाइथन सीख रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि उनको लगता है कि पाइथन, या नॉन आईटी वाले से पूछो क्या सीख रहे हो तो बोलते हैं सर मैं पाइथन सीख रहा हूँ। अब उनको क्या लगता है कि पाइथन सीखने से बहुत बड़ा मैं मुझे कुछ मैं तोप मार लूंगा, और ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप जो सीख रहे हो बेसिक फॉर एंड ऑल दोस थिंग, क्लास 10 का बच्चा भी लिख देता है फॉर लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, पाइथन सीखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं पाइथन सीखने से तुरंत जॉब मिल जाएगा, नो नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नथिंग लाइक दैट। Unless and until you do a advanced like task like building a web development, building a web application in Django, Flask, and all those things, or you do something using Python, basic Python. If you're from non-IT, so it's very difficult to get a job. Okay, you might get a job, but it's very difficult. So, सिर्फ Python सीख रहे हो, everybody is learning Python. Only Python will not work. Okay, you have to choose what you want to do. You want to work in as a web developer, as a backend developer, or you want to work as a automation testing, or you want to work in डेटा इंजीनियरिंग फील्ड, तो वहाँ भी पाइथन का यूज होता है। तो पाइथन का यूज अलग अलग सेक्शन में है, इसका यूज है, इसका यूज डेटा साइंस में भी है पाइथन का, इट इज यूज इन बिग डेटा ऑल्सो, इट इज यूज इन डेटा इंजीनियरिंग ऑल्सो, सो इट इज यूज एवरीवेयर, सो इट इज अ गुड थिंग। बट आप सिर्फ पाइथन सीख के नहीं कर सकते, दैट इज नॉट राइट। प्लस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, if everybody will learn the same thing, competition बढ़ोगे तो it's like is not good enough, तो वो आप मत करो। ठीक है, you try to learn a lot of things. I'll make a new video where I will tell you what are the 10 which is underrated courses if people are not aware of that thing. ठीक है, जैसे ये सबसे hyped courses है, I'm going to make a video maybe next week. What are the top 10 underrated courses, आप वो choose करो। Why you trying to do which everybody is trying to do the same thing, फिर job मिलना वो difficult है।
तो दिस इज ऑल्सो हाइप कि पाइथन सीखने से बहुत बड़ा आपको कुछ मिल जाए. इट्स नॉट लाइक दैट. Yeah, if you want to make a career, want to learn programming, okay, but that is not good enough. That is like a starting point. Basics है, वो ABCD है. ABCD से तो आपको लैंग्वेज नहीं आता है, उसके बाद बहुत ही सीखना पड़ता है. तो इस जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, उससे नहीं होता है, आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट हैव दैट थिंग इन योर माइंड. नाउ देन वी हैव Salesforce. अब Salesforce के बारे में क्या बताया जाता है? अरे Salesforce का बहुत जॉब है. People are selling you admin courses. कहते हैं एडमिन का कोर्स कर लो, प्रोग्रामिंग नहीं है. They're telling you अच्छा एडमिन का कोर्स कर लोगे, डेवलपमेंट नहीं करना है, एडमिन का कोर्स करना है. ठीक है, उसमें बेसिक्स थोड़ा बहुत रहेगा, हो जाएगा. इट्स नॉट राइट. एडमिन का कोर्सेज, एडमिन का जॉब्स इज वेरी वेरी लेस. मोस्ट नंबर ऑफ जॉब्स आर डेवलपमेंट कोर्सेज. उसमें आपको एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा which is more and less like Java. It's hard. It's not easy. So Salesforce is good. I'm not saying it's not bad. It's good. It has its own demand. Lot of jobs are there. Salaries are also good. But ये मत सोचो कि आप बेसिक करके आप उसमें चले जाओगे. नो, उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट का जॉब्स है. तो प्रॉपर डेवलपर बन के ही आप उसमें एंटर कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो रिमेंबर दिस थिंग. नाउ IoT, I truly honest, I don't know what is IoT, but I've seen people are like doing and going some courses. IoT का कोई कोर्स कर रहे हैं. कोई IoT का कोर्स नहीं होता ना, कोई IoT का जॉब होता है. Every course will have their own description and IoT में different. कोई बोलेगा मुझे पाइथन चाहिए, कोई बोलेगा मुझे वो चाहिए, कोई बोलेगा मुझे कुछ और चाहिए. तो देयर इज नो फिक्स. एंड आपको आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. सिंपल है ना, आप जाओ, इसको जाकर सिर्फ सर्च करो ना. आप यू व्हाई यू रिलाइंग फॉर एनीबॉडी टू टेल यू द आंसर. आप टाइप करो आईआईटी, आप देखो आईआईटी में क्या जॉब्स मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, व्हाट दे आर आस्किंग फॉर. ठीक, सपोज दे आर आस्किंग फॉर व्हाट, पाइथन, दे आर आस्किंग फॉर लिनक्स, दे आर आस्किंग फॉर दिस थिंग. बट यहाँ पर तो कुछ और मांग रहे हैं. यहाँ पर नोड जेएस एंड पाइथन मांग रहे हैं. So you have to go and understand what they are looking for. यहाँ जावा मांग रहे हैं. ठीक है, तो what is यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम वाले को भी बोल रहे हैं कि देखो वो भी आईओटी है. तो मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ, आईओटी का कोई कोर्स नहीं होता है. इज अ फील्ड. ओके, people can you can't have to do a you don't have to do a course to work on that thing. If you're lucky, you will work on that thing. There's no course to do. अब जो जावा पे जो काम कर रहे हो वो भी IoT developer हो गए. So what is the point? I don't. So it is a developer. It's just a development. Okay, it's not like that. Okay? So this is also not. See, you to understand a lot of things. There's no clear picture here. तो देखो आप क्या कर रहे हो. So it's not like that. कि आप कोई कोर्स करोगे, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आपको आना चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर आना चाहिए. दिस इज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स जॉब. ठीक है, यहाँ पर आपको पाइथन चाहिए, जावा चाहिए, डिफरेंट है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स आर देयर. ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बट डिफरेंटली ये हाइप्ड है. आप जाते हो कोई कोर्स कर लेते हो, तो डॉट नेट से भी आप आईओटी होता है. आईओटी का मतलब क्या है, क्या फिर, आई डोंट नो. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू से, डोंट जस्ट बिलीव कि अच्छा ये आईओटी में ये होता है. आप उसको जाओ, देखो कितना जॉब्स है. ठीक है, पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या. जैसे यहाँ एम्बेडेड है, तो एम्बेडेड में क्या मांग रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स दे आर मास्किंग. यू सर्च एम्बेडेड आईओटी, दूसरा एक और सर्च करो, देखो किसमें और क्या मांग रहे हैं. आर दे आस्किंग द सेम थिंग. सपोज आई कॉपी दिस थिंग, आई गो इन दिस थिंग एंड आई कॉपी दिस थिंग. ठीक है, कि अच्छा मैं सपोज यूर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यू थिंक अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, आई विल जस्ट गो हियर एंड सर्च. इससे मुझे चलो ये फील्ड मिला. कितना जॉब है इसमें, बहुत सारा जॉब दिखा रहा है, एम्बेडेड आईओटी, एम्बेडेड आईओटी. क्या कॉमन है, लेट्स थिंक. कॉमन इज लिनक्स. लिनक्स इज कॉमन, यूनिक्स इज कॉमन. ओके, टेस्टिंग फ्रेमवर्क इज कॉमन, बट आई डोंट नो व्हाट एल्स इज कॉमन. तो अब जाके देखो क्या कॉमन है. यहाँ पर कुछ और टूल्स मांग रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज टूल, जीएसबी, लोरा एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड यहाँ पर बट लिनक्स इज कॉमन. इफ यू सी लिनक्स इज कॉमन, एम्बेडेड सिस्टम इज कॉमन. सो आप फिर तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मुझे क्या चीज जानना चाहिए, आरटीओएस एंड ऑल दोस थिंग्स. देन यू गेट अ आइडिया कि अच्छा ये चीज का क्या डिमांड है और क्या चीज में. बट जस्ट गो एंड चेक द जॉब्स. मैटलैब, यहाँ मैटलैब मांग रहे हैं, यहाँ पाइथन मांग रहे हैं. यू डोंट हैव, यहाँ पर सी प्लस प्लस मांग रहे हैं. तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन. ठीक है, सो जॉब्स आर देयर बट क्लियर नहीं है कुछ आईओटी में क्या है. ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इट माइट, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इट माइट बी डिफरेंट, फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर इट माइट बी डिफरेंट. तो वो आप देखो. ठीक है, not blockchain. Blockchain, obviously, everybody is like
running towards that blockchain and then bitcoins and then all those things. So what I'm trying to say, there are jobs, there are people working on their startups, there are a lot of things happening, but the jobs market is not very high. So if I just search this thing, Control C, and I just search the number of jobs, how much jobs I can search. So if I go and just search blockchain, so how many blockchain jobs I'm trying to get? It's, you can check this thing. If I go to page number 6, these are old jobs that we did have, the expired jobs. The old jobs, so fresh jobs is very less. First of all, ठीक है. तो jobs है, but इतना नहीं जितना वो बता के रहते हैं, ठीक है. Jobs है, but it's not very high. ठीक है. So you can do it, but at the same time, don't just get carried away. कि बहुत demand है इसका. It's nothing like that. Yes, it is a demand is there, but it's okay. Like it's reasonable, not very high, but not very less. It's okay. But it's not like okay, मुझे blockchain करना है, नया चीज सीखना है. It's a very like limited field in which we can work. Okay, so let's say this job, blockchain architect, task. There are jobs, but then there are limited jobs. And last is testing. Why I have kept this thing? So testing के बारे में क्या है? अच्छा, testing, anybody can do testing. Person from become person also can do testing, and it's not like that. Even if you're doing a testing, you're working in an IT company. Okay, so if you somebody is from computer science company will definitely prefer that person over a people who have done a BCom or some very non-technical degree. Okay, and the problem with testing is that everybody is doing testing, so इतना competition है कि आपका resume कहाँ जाता है पता नहीं चलता है. ठीक है, so with this I will end this video. Sorry it got late, but I wanted to cover the things in detail. Okay, I'm I'm not saying that I know everything about everything. मुझे ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ पता है, but as a as I have worked in IT industry for more than 12 years, and I've seen this thing from closely, everything, almost everything I've seen closely, and I do these things. Okay, I talk with people. I write answers on Quora. If you can check my Quora profile, you'll get how many answers I have written that thing. So just that is why I'm able to answer, able to make this video. And if you want to check, if you just want to, suppose you are doubting me that who am I, मैं कौन हूँ, मेरे में is whether I am eligible enough or capable enough to guide you. Just search my name. Just search my name. You will get to know everything about me and my background. किसी भी ब्लाइंडली आप मुझ पे क्यों आप बिलीव करोगे, मेरे पे बिलीव मत करो. अब मेरा पूरा प्रोफाइल देखो. ओके, सो वंस यू चेक द प्रोफाइल, यू टू नो एवरीथिंग. मेरा वीडियोस है, देन आई मैं लिंक्डइन पे मैंने जो आर्टिकल्स लिखा है, देन a lot of things, and then I have written a lot of answers on Quora. Once you visit my Quora profile, you get to know that what I've done in my past and how people have benefited by reading my answers. But in Quora, I've done, I've written a lot of answers, but right now I'm trying to be active on YouTube. That is why I'm trying to make the videos. Okay, so that is the whole and sole purpose. And yeah, so with this thing, let's stop the video. I hope you will like it. If you have some counter comments, obviously, आपका opinion different हो सकता है मुझसे. Please comment it. Okay, but what I do, I do what I know. Okay, and what I think is better for you. Okay, you might disagree. It's okay, but that is how the life has to be. So with this, I end this video and thank you. And let's meet next time.